Students, today we will do the chapter 12 friction of class 8th. So firstly we will do the keywords. So first keyword is ball bearing. So what is ball bearing? It is a device which is used in many machines to reduce the friction. So ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में. Students, it is the structure of ball bearing. It is ball bearing. In this ball bearing, there are some balls like this, which are help to reduce the friction. These balls are help in reducing the friction, and ball bearing are used in many machine, like we used in automobiles also. So there are lot of use of these ball bearings. Okay, next is drag. What is drag? The friction force exerted by fluid is also called drag. As we know that a fluid also exerted friction force. Like if any object or anything want to move in air or water. What is fluid? Air and water that can flow easily. So they are called fluids. So if we take example of anything like birds, like fish, so they also experience a friction force. So जो भी friction force होगा जो कहाँ पर exert हो रहा है fluid के केस में, so this friction force is known as drag. Next point is what is friction? So what is friction? Friction is a type of force which oppose the relative motion between two surfaces in contact. Okay, as we know that always friction force act between the two surfaces that are contact with each other. Suppose if it is a table and one book is placed on the table. Okay, so the book is contact with the table surface. So now the friction force act between the book and the table. So यहाँ पर जो हमारा friction force apply होगा. Suppose this book we want to move this book in this side. So friction force always act opposite to the direction of the motion. So next is interlocking. What is interlocking? When irregularities on the two surfaces lock into one another. So this is known as interlocking. As we know that if there is two rough surface, as we know that on the rough surface there are grooves are present on the rough surfaces. Okay, as we know that when two surfaces are contact with each other, then they lock with each others. So this is known as interlocking. Next, lubricants. What is lubricants? The substance which reduce friction are called lubricants. So कोई भी substance like oil, grease, okay, so there are many substances which help to reduce the friction. So these substances are known as lubricants. As we know that when our machines do not work properly, जब हमारी जो मशीन्स है अगर वो रोटेट या फिर अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करती, लाइक इन केस ऑफ फैन, जब हमारे फैन अच्छे ढंग से रोटेट नहीं करता तब हम उनमें क्या अप्लाई करते हैं, तब हम उनके अंदर ग्रीस देते हैं या फिर हम उनको ऑयलिंग करते हैं. सो इट इज़ लुब्रिकेंट्स. नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन. व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? एज वी नो दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शन. वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, one is static friction, second is sliding friction, and third is rolling friction. Rolling friction come into play when an object roll over the another. जब किसी भी सरफेस पर जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करना स्टार्ट कर देता है, so this type of friction is known as rolling friction. Okay, because as we know that rolling friction, in case of rolling friction, friction is very less as compared to the other types of the friction, that is sliding friction and static friction.
Okay, so what happen in case of rolling friction? Suppose if it is surface, okay, and this is a bus. So अगर कोई बस रोल करती है, it roll with the help of tires. So जो as we know that the area of contact of bus is very less than with the surface. जो हमारी बसेस का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या बहुत ज़्यादा कम है हमारे सरफेस के साथ. जितना ज़्यादा एरिया कम होगा उतना ही फ्रिक्शन भी क्या होगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा. ओके, सो इट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज sliding friction. What is sliding friction? It comes into play when an object is slide over another. Okay, suppose if there is if we go any hill station. जब हम किसी भी हिल स्टेशन पर जाते हैं और जब वहाँ पर स्नोफॉल हो, सो जब वहाँ पर स्नोफॉल होता है और वहाँ पर आइस हो हर जगह, तो आपने देखा होगा हम क्या करते हैं वहाँ पर स्लाइड करते हैं. सो स्लाइड के केस में क्या होगा कि हम मोशन के अंदर कंटिन्यू आ जाते हैं और हम ईजिली स्लाइड कर सकते हैं. सो वहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन के बजाय हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर जो फ्रिक्शन है वो कम होता है एज कंपैरिजन टू स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? It comes into play when we try to move an object at rest. So ये कब प्ले करता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? एट रेस्ट पर होता है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन कब प्ले करेगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है. सपोज इफ दिस इज अ वुडन बॉक्स और ये क्या काफ़ी हैवी बॉक्स है. सो सपोज करो जब आप इसको स्टार्टिंग में मूव करने की कोशिश करते हो, व्हेन यू अप्लाई एनी फोर्स एंड यू वांट टू मूव दिस बॉक्स इन दिस साइड, सो आपको काफ़ी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इसको मूव करने के लिए. बिकॉज अब क्या है जो सरफेस के बीच में और जो हमारा बॉक्सेस है उसके बीच में कौन सा फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा है? डैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. और जो इसको रेस्ट में रखने की कोशिश करता है, सो स्टैटिक मीन्स ही होता है रेस्ट. सो यहाँ पर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. सो यहाँ पर जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है डैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके स्टूडेंट, दिस इज क्लियर फॉर ऑल.